بائی دا وے اسپیکر صاحب, اب مجھے پتا ہے اس پہ ناراضگی ہوگی بٹ ہو جائے, ڈزنٹ میٹر, مجھ پہ پہلے ہی بہت پرچے کٹے ہوئے ہیں. ہماری 2 خواتین تھیں پی ٹی آئی کی جن کا کور کمانڈر ہاؤس سے دور دور کھڑی تھی. ایک آج اسمبلی میں بیٹھی ہیں, ایک آج جیل میں بیٹھی ہیں. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک نے معافی مانگ لی ٹی وی اینکر سے, اور ٹی وی اینکر نے معاف کر کے آئی پی پی میں ڈھا کے اس ہاؤس میں لے آئے. پنجاب از دا بیک بون آف پاکستان آنریبل اسپیکر. پنجاب نہیں ہو تو پاکستان نہیں ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جس عورت نے کرونا سے اور کووڈ سے پورے پنجاب کو, پورے پاکستان کو بچایا, اس کو ہم نے جیل میں ڈال دیا. Because that is what she deserves. جو چور ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے, پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, اور جو شریف ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ تو اس ملک کا حال ہے سر. جائیں گے کہاں سر؟ میرے پاس تو فورن پاسپورٹ بھی نہیں ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے 10-10 حلقے میں لوگ ہیں, 10-10 لاکھ, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ 2 ڈفرنٹ پرائم منسٹرز نے یہ بات کہی ہے. اس وطن میں شرم کی بات ہے کہ جس نے جانا ہے تو چلا جائے. کہاں جائے؟ 350 بندہ ایک بوٹ میں کیپسائز ہو جاتا ہے. کسی نے ان کے خاندانوں کا پوچھا؟ کوئی پینشن دی, کوئی پلاٹ دیا, کوئی تمغہ دیا ان کو؟ This is what we're doing to our youth. Honorable Speaker, in the last 2 years آپ کے پاکستان سے 15 لاکھ پڑھے لکھے بچے بچیاں چلے گئی ہیں. بہت عظیم پاکستان ہے. ایکسپورٹس کی شرح دیکھیں, فائنانسنگ کی شرح دیکھیں. یہ ہم تو نہیں کہتے سر, جو کتاب ہے یہ لوگ چھاپ رہے ہیں, میں تو اس سے پڑھ کے بتاتی ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ شندانہ گلزار صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Honorable Speaker. If you'll allow, as the first elected woman from the KP in the last 76 years in the history of Pakistan in this House, as well as given the dubious honor that I've not been allowed to speak on this very same floor for the last 4 months, I hope you'll be a bit tolerant and stand with me while I speak in 3 different languages, the last one for my own particular constituency. Honorable Speaker, the reason I decided to speak now, the honorable colleague who spoke just before me is somebody I consider a friend. Her father was an honorable colleague as well, and somebody I respected immensely. The reason I speak English, Honorable Speaker, is that unfortunately the elites of this country consider anybody who doesn't speak English as filth. Those of us that do not speak the language of Karachi and Lahore are relegated to the masses, the awam, as if it's something to be proud of. Would you believe, Honorable Speaker, this entire August House is so honorable. It is so just that when I was abducted from my house on the last day of the 9th of August of PDM's government, not a single woman in the parliament, whether it be these big names from People's Party or the Noon League, not one person spoke up. That how can you abduct someone? If you arrest me, absolutely fine. Even then I had some, let's say, leverages, but I didn't use any. I had nothing to hide. When I was picked up, I was told a couple of things. That we would like you to join Bilawal or Mariam's party. I don't know who this we is, but they were wearing masks. And they said, we would like you to join these 2 parties. And I said, unfortunately for all of you, I'm far more educated than Bilawal and Mariam. And I'll be damned if I ever sit with them. I have immense respect for that side of the house. I have friends there. I have brothers and sisters. I have relatives. But the leadership, Mr. Chairman, I'm afraid the morality is less than 0. And I'll tell you why. My mother has nothing to do with politics except that she voted for me once. The women of my family, the women of Shahryar's family, of Qasim Suri's family, of Zartaj's family, of Aisha's family, of Anika's family. My sister here was a bit upset about the bangles that Asad Kaisar Sahib mentioned. Does she realize what our women have been through? Not only were our bangles taken off, our dupattas and our clothes were taken off. Shame. Who is going to pay for that legacy, sir? So let's not proselytize about who's more loyal to the king in this particular world, and that king being the women of this country. Honorable Speaker, we women are 52% of Pakistan. We're not a women's rights or human rights issue. We are a national issue, and I will not allow anyone in this floor to make light of us.
I have seen the honor code that my fellow sisters sitting on that side of the house operate on. Not one person spoke when Tayyibah Raja was grabbed by her hair by the Punjab police. So please, let's not pretend to be extremely moralistic. We are what we are. Egocentric and fixated politicians who would sell our own mothers if it would give us a seat in this assembly. Form 45 and Form 47, it is an embarrassment to this country. Now I'll come to Urdu, Honorable Speaker. Acha ji. Speaker साहब, मुझे किसी औरत से किसी मर्द से कोई बैर नहीं है. मेरे रिश्तेदार हर सियासी पार्टी में हैं. बल्कि मुझे तो अक्सर जब हम गवर्नमेंट में थे मुझे डांटे पड़ती थी कि इसके रिश्तेदार तो पीपल में भी हैं, ANP में है, ये कॉम्प्रोमाइज है, एटसेट्रा एटसेट्रा. पिछले 2 साल में मुझ पे जितने केस हुए हैं और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं. इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022. 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अभी भी इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूं, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था. मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन MNA. मुझे नहीं निकाला जा सकता था. आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम CDA एंड द पुलिस. अब एक CDA पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान. ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया. पर जहाँ पे स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊं? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊं? वो तो जो हमारी पार्टी थी, मैं उनसे नहीं लगती थी. स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी. मैं एक लड़ाका हूं, हमेशा से थी. मैं हर किसी के साथ लड़ती हूँ, अपनी लीडर के साथ भी लड़ी हूँ, हक के लिए लड़ती हूँ. और आज आपको ये बता दूं कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है. ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है. और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे. ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन. सर, यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन. आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज़्यादा बेड हों, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है. लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है. भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहाँ सारे इलाज करते हैं. तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए. जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूंगी. बाय द वे स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराजगी होगी, बट हो जाए, डजंट मैटर. मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं. हमारी 2 खवातीन थी PTI की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी. एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं. फर्क दोनों में ये है कि एक ने माफ़ी मांग ली टीवी एंकर से, और टीवी एंकर ने माफ़ करके IPP में ढा के इस हाउस में ले आए. पंजाब इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान. ऑनरेबल स्पीकर, पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा. और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया. Because that is what she deserves. जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है. माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है. सर, जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है. हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है. इस वतन में शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए. कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है. किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर यूथ. ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चले गई हैं. बहुत अजीम पाकिस्तान है. एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें. ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ. लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है. खान साहब को बहुत, many people I'm sure they hate खान साहब, and they have probably every right to. लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा वो इसलिए जेल में बैठा हुआ है क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है. और गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट. स्कूल, हस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया. दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी. सर, लोग कहाँ मरे हैं ये तो बताएं.
They are punishing KP for giving a vote to Imran Khan. اور سر یہ اتنے بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹمبر میں بند ہو جائے گی گرمی. ہم خان کا ساتھ اس بات پہ چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر. ابھی بھی وقت ہے. ہوش ہوش ہوش. آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن, سر اسی کو دیکھ لیں. تمام صوبوں کو اکٹھے اٹھائیں, مت کریے تفرقے. آگ لگنے والی ہے بہت جلدی, ہمارے ہی ہاتھ سے لگے گی, اور پھر یہ ہاؤس کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ نے آپ پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے, یہ اس سے ڈرے, اور کسی چیز سے تو نہیں ڈرتے, اس کلام سے ڈرے. ملک کو ٹھیک کریں. ہم سب نے مر جانا ہے, اس ہاؤس میں جتنے بیٹھے کوئی قبر پیسے نہیں لے کے گیا, لیکن خدا کا خوف کرے, وطن کو فرسٹ کرے. دیٹ از وائی عمران خان از ان جیل. پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. تھینک یو. شکریہ.